Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing a very interesting play, that is King Solomon and the Baker. So let's just begin with this chapter. So it's King Solomon and the Baker, right? And we'll be studying about this chapter. See, here in this chapter, you will read about the story of a king whose name was Solomon and a baker, right? We'll be studying a story of a king and a baker. और ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है अबाउट द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर द लाइज, कि कैसे एक सच्चाई की जीत एक झूठ के ऊपर है, राइट? दिस इज अ स्टोरी ऑफ जनरसिटी एंड काइंडनेस। बहुत ही ज्यादा दयालुता और एक काइंडनेस जैसे बिहेवियर पे डिपेंड है। all the characters in this story will give you a lesson that will help your life living your life, कि आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए एक अच्छा लेसन मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो फर्स्ट फॉर द सीन वन, दैट इज एट द बेकर्स शॉप पे सबसे फर्स्ट सीन है बेकर। आई लव माई वर्क, मुझे अपना काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्क्वीज ब्रेड, और साथ साथ ही इज जस्ट चूइंग द ब्रेड। plenty of bread to eat stretches a nice warm place to work in, he is saying। बहुत सारी ब्रेड है यहाँ पे खाने के लिए, एंड इट्स अ नाइस वार्म प्लेस टू वर्क, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बिसाइड्स everyone come to see me, and besides that हर कोई मेरे को देखने के लिए आएगा। everyone except those miserable poor folks, कि वही मिजरेबल लोग जो वो गरीबों जैसे लोग होते हैं वो उनके अलावा छोड़ के सब, दे डोंट बॉदर मी बिकॉज दे डोंट हैव इनफ टू बाय मी ब्रेड। दे डोंट बॉदर मच बिकॉज उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है ब्रेड खरीदने के। नाउ old woman, oh, that is old woman। देखिए there is a semicolons present over here, you can see this is present, why? To show कि वो क्या कहने वाले हैं। Please sir, may I have you some of your bread, कि क्या मेरे को आपकी ब्रेड मिल सकती है? The baker is saying 2 shekels for a loaf of bread। एक लॉफ ऑफ ब्रेड के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे? 2 shekels, इट्स अ करेंसी, राइट? ओल्ड वुमन counting her few coins, please be kind sir, I have only 4 egg rolls, she's saying that I have only 4 egg rolls, please can you please be kind? Baker, get out with your miserable 4 egg rolls, I have nothing for you here, he's saying, the baker is saying, you just go from here, I have nothing to give to you because you are not able to pay me the money। ओल्ड वुमन, यू आर वेरी रूड एंड अनकाइंड वुमन। यंग मैन, आप बहुत ही ज्यादा रूडली एग्रेसिवली मुझसे बात कर रहे हैं। सिंस यू रिफ्यूज टू सेल योर ब्रेड, कि आप मना कर रहे हैं अपनी ब्रेड को बेचने के लिए, देन आई विल पे यू नथिंग, आई वोंट बी पेइंग यू नथिंग, बट आई स्टैंड हियर जस्ट आउटसाइड योर डोर एंड विल एंजॉय द स्मेल ऑफ योर माउथ वाटरिंग ब्रेड। saying that as you are not willing to sell your bread, so I'll just stand outside your this shop and will just smell your mouth watering bread outside the bread counter। Now, baker, he's saying, you cannot enjoy the smell of my bread। आप इस ब्रेड को की स्मेल को enjoy नहीं कर सकते। You miserable old hack, he's saying, you miserable old lady। He police took his old crone away, take her to the king। और वो उसने क्या किया? उसने बोला पुलिस को कि ये क्या है, थीफ है, प्लीज इसको लेकर जाओ, टेक हर टू द किंग, इसको किंग के पास लेके जाओ। नाउ द सेकंड नंबर सीन एट किंग सोलोमन कोर्ट, ये किंग सोलोमन कोर्ट पे ये पूरा सीन हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? बेकर, your majesty, the law said what is enjoyed must be paid for। whatever you are enjoying, whatever services you are taking, you have to pay for। law ऐसा ही बोलता है। and this woman enjoys the sweet smell of my bread, so she has to pay me something, right? but demanded payment, she didn't pay me anything, but she has to pay, उसको pay करना था, she didn't pay me anything, and I demanded payment, कि I have to demand the payment। now King Solomon to the old woman, did you enjoy the smell of the bread? Did you enjoy the smell of the bread? Old woman, yes, my lord, I did। Smell was so tempted that I cannot resist myself, and I was so hungry that I could not resist. I was not able to resist myself. I was feeling so hungry at that time। King Solomon, it is true that we are law abiding people, कि हम लोग को लॉ को अबाइड करना चाहिए। देखिए जब भी ये वर्ड आता है लॉ, लॉ के साथ हमेशा अबाइड आता है। ये एक फ्रेज है, ऑल्सो ये एक preposition भी है। यू हैव कोटेड द लॉ करेक्टली, आपने लॉ को बिल्कुल सही कोट किया है। द वुमन ओल्ड, दिस पुअर ओल्ड वुमन मस्ट पे, इनको पे करना चाहिए। बट वी आर ऑल्सो पीपल
having compassion and generosity, हम लोग के अंदर भी दयालु वाली भावना होती है. Can't you be generous enough to forego the payment? क्या आप उन्हें जाने नहीं दे सकते? Let her forgo. Now King Baker, no, I demanded my payment by the law. Enforce the law as you must. आपको लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा. नाउ किंग सोलोमन, एज यू इंसिस्ट, जैसे आप हमको कहते हैं, द बेकर इज राइट, द लॉ इज द लॉ एंड आई मस्ट इन्फोर्स. इस बेकर बिल्कुल कह रहा है, सही है, कानून कानून है और मैं हमको उसको इन्फोर्स करना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फोर्स? उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. आई डिजायर टू बी जेनरस, मेरे को अंदर से जेनरस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए. बट आई मस्ट आस्क फॉर फर्स्ट, आई मस्ट आस्क फर्स्ट दैट हाउ मच मनी आई हैव टू पे फॉर द स्मेल दैट आई हैव डिड. नाउ ओल्ड वुमन, ओनली दीज 4 egg rolls, योर मेजेस्टी, ओनली 4 egg rolls. Now King Solomon, just count them out. उसको count करिए. Now the old woman, she started to move to the baker and she just counted. She started to move to the baker and she started counting. Right. Now King Solomon, no, not to him. Count them out to me. मेरे को count, मेरे सामने count करिए, मेरे हाथ में. And baker will listen the sound of those coins. Now old woman counting the coins. King Solomon के पास she's just counting. आवाज आ रही है सिक्कों की. 1, 2, 3, 4, right. Now King Solomon, Baker, did you listen carefully? क्या तुमने ध्यान से सुना इस चीज को? Baker, I did, your majesty. Yes, of course I heard. King Solomon, did you hear the clinking noise of the coins of the old woman? Baker is saying, I did, my lord. Yes, I have heard. Now King Solomon is saying, then this shall be your payment. यही तुम्हारी payment है. For the smell of your bread, this old woman has paid you the sound of her coins. अब वो क्या बोल रहा है? उनकी स्मेल ऐसी थी जो कि हवा में थी, वो उसने सूंघ ली. सिमिलरली आपको भी आवाज आई सराउंडिंग्स में और आपने भी सुन ली. Commanding, now he's just giving an order. Now you just leave and bother me no more, you miserable baker. कि अब जाओ यहाँ से और आप बहुत ही ज्यादा miserable है. Miserable means the one who shows a very bad behavior towards the old and of course the poor people, right? Presents the old woman a loaf of bread. Did dear old woman, he's saying, this bread is for you, a gift from the baker. और ये bread आपके लिए है एक baker की तरफ से as a gift. Now clearly and distinctly to the audience, I taxed him this morning. और मैंने उसके ऊपर tax लगाया है. The audience just clap and the curtains down. And audience ने बहुत ज़्यादा clap किया और पर्दे नीचे गिर गए. And finally the show get over. And this was beautifully, fantastically, fantabulously description of those miserable baker, that how he was even charging the payment for this smell. We should not do this. We should never be too ungenerous toward our elders, and we should not do this kind of odd behaviors to our elder ones, especially to the customers. And please keep focusing on your exam and stay blessed and keep smiling. Thank you.